एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स कश्मीर वैली में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट आई हैं, दो रिपोर्ट्स व्हाट दे आर सेइंग इज, जो मिलिटेंट लीडर्स हैं जितने भी अभी बचे हैं वैली में, सबके पास अभी सैटेलाइट फोन्स आ गए। अब वो कैसे आ गए, दैट तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि पाकिस्तान के थ्रू आए होंगे। अब मैं ये जानना चाह रहा था, और काफ़ी लोग इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि सैटेलाइट फ़ोन्स का उनके पास होने का इम्प्लीकेशन क्या है, और इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस उसको ट्रैक कर सकती हैं क्या। तो ज़रा थोड़ा इस बारे में, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा इस बारे में आप हमें अवगत कराएं। थैंक यू। ये सैटेलाइट फोन्स ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। और मेरे ख्याल से जो अभी मुझे पता चला था, इरिडियम के सैटेलाइट फोन यूज करते हैं लोग। इरिडियम कंपनी जो है 1999 में बैंकरप्ट हो गई थी, बिकॉज ये चलती नहीं थी। तो ये जो मिलिटेंट्स वगैरह हैं, इन लोगों ने, या जो स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट होते हैं जो सी पे जाते हैं, ये लोग यूज करते हैं जनरली। तो मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, सैटेलाइट फोन होता क्या है। तो सैटेलाइट फोन दो तरीके की सैटेलाइट यूज करते हैं। एक तो जियो सिंक्रोनस या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो कि अपेरेंटली स्टेशनरी होती हैं। वो स्टेशनरी तो नहीं होती है, बट अपेरेंटली ऐसा लगता है कि उसी एरिया पे हमेशा रहती हैं, क्योंकि अर्थ के साथ साथ घूमती है। तो वो एरिया कवर करती हैं कंटिन्यूअस। एक ही सैटेलाइट या दो सैटेलाइट पूरा एरिया कवर कर लेती है। डिसएडवांटेज क्या है, वो 34,000 35,000 मीटर पे की हाइट पे होती है, वेरी वेरी हाई। ओके। 34,000, हाँ, वेरी हाई। एंड दे कवर लार्जर एरिया। पर क्या है कि वो 70 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ और 70 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड, इसके बीच का एरिया ही कवर करती हैं। ओके। यानी पोलर एरिया नहीं कवर करेंगी, बहुत सारा एरिया छूट जाता है। तो जब छूट जाता है ये 40 डिग्री का एरिया, उसमें, और उसमें भी ये जो पहाड़ है उस पर ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, ये नहीं करता। तो हमारे यहाँ ऑथराइज होता था पहले, आपको याद होगा, एक इनमार सेट करके होता था सैटेलाइट। तो ये हम यूज करते थे ऑफिशियली, मतलब जो फौज में या हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये सब के लिए। उसके बाद थोराया, थोराया नाम सुना होगा काफी आपने, कि थोराया के सेट यूज हो रहे हैं जी। या कि जिस सियाचिन में थोराया सेट यूज हो रहे हैं, वो हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे हम लोग। इरिडियम अब दूसरी टेक्नोलॉजी होती है जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की। इसमें क्या, हाँ, ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एडवांटेज क्या है कि एरिया ज्यादा कवर कर लेती हैं, लेकिन अकेली नहीं करती, क्योंकि रिपीटिशन ज्यादा होता है लो अर्थ के ऑर्बिट होने की वजह से। तो इसमें जैसे दो मेन हैं सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ओके। एक तो है ग्लोबल स्टार और एक है इरिडियम। ओके। ग्लोबल स्टार की 44 सैटेलाइट हैं, 44 सैटेलाइट, और इसकी 66 हैं इरिडियम की। ओके। तो ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है इनका, जैसे जीपीएस की सैटेलाइट्स होती है उसी टाइप। ओके। तो इसके जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं वो इस तरह से यूज करते हैं लोग कि ये जो ग्लोबल स्टार है वो 52 डिग्री इंक्लिनेशन पे काम करती है। ओके। यानी वो ऐसे अर्थ के 52 डिग्रीज पे ऐसे घूमती है। अच्छा। क्या बोलते हैं आपके, अगर आप परपेंडिकुलर लो इक्वेटर का और मेरिडियन का, ओके। तो 52 डिग्रीज के एंगल पे ऐसे घूमती है। तो ओके। वो भी एरिया कम कवर करती है। तो इरिडियम जो है, हाँ। लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज है। मैं कहता हाँ। हूं कि ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये यूज करने चाहिए सैटेलाइट फोन। अच्छा। ओके। ये इसलिए करने चाहिए कि ये एक तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। हम्म। जैसे ही आप ऑन करते हैं फोन को, ओके। आपकी एक्यूरेट लोकेशन पता चल जाती है। ओके। ओके। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास कैपेबिलिटी है, जो फौज के पास भी और जो सिविल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हाँ। हम सब के पास इतनी बढ़िया कैपेबिलिटी है सैटेलाइट फोन को पकड़ने की और ट्रैक करने की। ओके। अभी आप देखो, एक जो ट्रेन्ड सोल्जर होता है, उसके हाथ में जब रेडियो सेट होता है, वो भी बिना बात के प्रेस टू टॉप स्विच दबाता रहता है। हाँ। हाँ। मतलब ट्रेन्ड सोल्जर के भी दिमाग में जब खाली होता है वो दबा देगा, तो पकड़ा जाता है, रेडियो साइलेंस टूट जाता है। तो
सैटेलाइट फोन तो ऑन होते ही ट्रांसपोंडर से कम्युनिकेट करेगा, ओके और एवरी सैटेलाइट फोन हैज गॉट अ यूनिक सिग्नेचर. ओ ओके So this unique signature is known by once the satellite phone is switched on. ओके होता क्या है, तो वो जब कम्युनिकेट करता है ट्रांसपोंडर से, तो वो अपना डेटा भेजता है. ओके ये फलाना फोन है, फलाना ये है नंबर इसका, फलाना ये है, सब कुछ दे देगा. हाँ उसका जो मेटा डेटा है वो भेज देता है, ओके. और वो मेटा डेटा हमारी एजेंसी पकड़ लेती है तुरंत. कितना टाइम लगता है उसको पकड़ने में? उसको पकड़ने में जैसे ही खोला, हाँ हमारा एंटायर बॉर्डर एरिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा नॉर्थ से, यानी कि आपका नागालैंड, मणिपुर से लेके और गुजरात तक, हाँ हाँ कवरिंग भूटान, नेपाल, अक्साई चीन, ओके सब कुछ कवर करता है हमारा पूरा, ओके पंजाब और राजस्थान, ओके गुजरात. हाँ Now, as there are many small units हाँ which हाँ are placed in such a way that none of the area is left blank. ओके So as soon as satellite phone is switched on, हाँ the data is captured. ओके और जैसे ही वो यूनिक आईडी भी उसका नोट हो जाता है. ओके आई रिमेम्बर कि आई वाज विद अच्छा, फिर क्या होता है, ये जो है ये सिग्नल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनटीआरओ, आईबी, इन सब का एक मतलब नेटवर्क है, तो वो सब पता चल जाता है. उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है विद इन नो टाइम ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को दे दी जाती है. ओके आई कैन ह्यूमन अंडरस्टैंड. इंटेलिजेंस को मिलते ही फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं. मुझे याद है मैं कई ऐसे ऑपरेशन में रहा, राजस्थान में और ईस्ट में भी, जहां पे हमने विद इन नो टाइम 1 मीटर की एक्यूरेसी में मिल जाता है लोकेशन. ओके So you can nab them. So satellite phone, using satellite phone is actually disadvantageous for Any any militant. group of militant. Yes, militant. ओके लेकिन एक बार बताओ, सपोज मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास सैटेलाइट फोन है और मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ, तो इवन It देन can be आई कैन tracked live. Yeah, it can be tracked live. That is the beauty of it. ओके ओके वो ट्रैक आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं. और जहां पे बंद किया और फिर जहां खोला, क्या करते हैं इनिशियली उसको जो एकदम जंप ऑन नहीं करते, वो स्टडी करते हैं कि क्या मूवमेंट है. उससे पता चल जाता है कि कमांडर है कि लोकल लेवल का है कोई है, या तो कई बार क्या होता है फॉरेन टूरिस्ट ले आते हैं, उनको पता नहीं होता पॉलिसी इंडिया की कि यहाँ पे सैटेलाइट फोन वर्जित है. इंडिया में सैटेलाइट फोन not allowed. Now, Iridium has got 4 type of sets. One is for US government use. It is something called 9575 alpha. Okay. The number, I think. One is 9555. Okay. And there are 2 sports models which are used by people like me and you. Okay. So ये भी पकड़े जाते हैं. तो कई बार हम पकड़ते थे राजस्थान में, पता चला रिजॉर्ट में कोई है, तो पता चला गलती से ले आया था और उसने बैटरी चार्ज करने के लिए फोन लाया था. अच्छा. So what we used to do, we used to confiscate, और जब आप जाएंगे तो अपना ले जाना. Okay, fine. When you leave the country, yeah. But for militants, like if you lot of people must have heard that precision weapons are being used by US in many places, Afghanistan, or Israel was using against Hezbollah and many precision weapons. Okay. Those precision weapons were basically after tracking these satellites. Oh. It's very easy to yes. तो मतलब ये तो so it is not nothing. It is not a something which we should be scared of or red herring. Nothing. It is very normal. Okay. अच्छा Colonel Pankaj, India is capable of doing that. Okay, I got your point, and I am very happy that we have got this capability to track them and neutralize them and use it to our advantage. Let us be very clear about it. Correct. चलो हो गया. Correct. अच्छा, अब 2 टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो आती है साइबर वारफेयर और एक आता है हाइब्रिड वारफेयर. थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफ में थोड़ा सा आप हमें बताते हैं कि साइबर वारफेयर कैसे रहेगा और हाइब्रिड वारफेयर किसको बोलते हैं.
Mr. Hoffman gave this terminology of strategic warfare में Frank Hoffman थे, उन्होंने यूज किया था इसको, wherein though this technique of strategic warfare is being used for last 3,000 years, but it came to being in fore now when the non-state actors, or when people are waging war against some country in guise of something else. Okay, Say, okay. I will give example of Hezbollah. Hezbollah was, they had their own agenda, but everything was controlled by Iran Oh, against okay, Israel. okay, So this was called hybrid warfare, where at one side you were doing conventional warfare also. Palestinians were doing something, but a particular entity was created to wage war. okay, Similarly, if you see Nepalad warfare, where Britishers use Scottish people, or many such examples are there. So what happens is, when you use, like we have been facing hybrid warfare at many fronts. Like what all it entails. Hybrid warfare entails irregular forces, sleeper cells, where I feel that this is a part of when you see at 55 locations, suddenly at some the stone pelting starts. What is that? It is part of hybrid warfare. okay, okay, That it is not, it is planned. It is not suddenly something has happened at a particular day, at a particular time, at different location all over India. Stone pelting started. This means it is some planned affair. This means it is part of hybrid warfare. okay. So cyber warfare is one part of hybrid warfare. Hybrid warfare. Okay, okay. Yeah, So, like proxy war, hybrid war, ecological warfare, biological and chemical warfare, even ecological warfare. Like if you remember, when with PL 480, this Parthenium, the Congress grass, and Lantana came. yeah, I remember. So yeah, so this created a havoc in weed. It was basically by weed companies which started this type of warfare, because we were with during Cold War, we were so Russia was supporting us. In 71 war, US was supporting Pakistan. So it was a hybrid warfare. At one end, the conventional war was going on. On other end, there other type of wars were going on. Okay. So So, cyber warfare is part of part hybrid of warfare. hybrid warfare. Okay, I got your point. You can say multi-dimensional warfare. You can say the dynamics and perceptions may be different at different level, but it is part of hybrid warfare. सी मीन्स जो यूक्रेन आर्मी है उन्होंने अजो बटालियन यूज़ कर रहे हैं वो मारियापुल में, और अभी ओडेसा में भी एक अजो बटालियन है जो आर बेसिकली दे आर नॉट रेगुलर फोर्सेस, दे आर समथिंग डिफरेंट. वो दे ऑफ कोर्स रशियंस तो उनको बोलते हैं कि वो नाजी बटालियन है, दे गोट दैट कंसेप्ट. बट इवन रशिया का भी मैंने सुना है कि कुछ सीरियन मर्सिनरीज को यूज़ करने जा रहा है. चेचन वाले तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं ही. तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग किसी न किसी तरीके से एक हाइब्रिड वारफेयर के चक्कर में रहते हैं. ऑफ कोर्स साइबर वारफेयर भी उसका पार्ट है, इरेगुलर फोर्सेस भी उसका पार्ट है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं अभी बात कर रहा हूँ साइबर वारफेयर की. अभी मुझे किसी ने बताया, आई वाज टॉकिंग टू वन एयरफोर्स ऑफिसर जो कि मेरा दोस्त है. उसने कहा कि जब हम किसी से एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो उसमें दुनिया भर के कंप्यूटर और ये जो वो सब सिस्टम यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो टारगेट एक्विजिशन में डिप्लॉय होती है. आप मिसाइल ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. इज इट पॉसिबल कि हम जैसे किसी का एयरक्राफ्ट हम खरीदें, जैसे फ्रांस से हमने खरीदा, राफेल खरीदा, इज इट पॉसिबल कि जो भी उसमें चिप्स यूज होती हैं उनको किसी तरीके से जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो उसको मैनिपुलेट करके हमारे टारगेट एक्विजिशन को इन्फ्लुएंस कर सके? इज दैट पॉसिबल? Now there are two things in it. I will tell ओके, you.
Okay, Well, you tell see, me. cyber warfare is a continuous warfare. Okay. It is something like electronic warfare where you have countermeasures, countermeasures, countermeasures. This means, I will give example. There is a ship which is going, which has got a radar, which can track an aircraft, coming fighter aircraft, which we may bomb it. So what it does, it will hold on the waves, Doppler. It is working on all Doppler and such things. So it will hold on to those waves and leave after some time. So when the calculation is done of time and space, distance calculations are done, then the accurate position of the ship is not known to the aircraft. This is electronic countermeasure. Now aircraft has got something, electronic countermeasure, which if the ship stops this data for some time and releases, the aircraft comes to know that it was held for some time. There are some changes in the waves. So it is electronic countermeasure. Similarly, in cyber warfare, it is a continuous process because the malware is being developed each day. The counter is being developed each day. So one cannot say that the same malware can be used continuously. Every day, there are experts which keep doing this work only in military. I'm talking of military specifically. I have done an advanced course in cyber security and cryptology. I'm expert in this field. When we say that Pentagon was hacked by hackers, because Pentagon is working on internet or intranet. Or I will tell you about, since you are talking of command and control system, of whether it is aircraft, whether it is guns, whether it is air defense guns or missiles or anything. Basically, we are talking of command and control systems, whether of aircraft or anything. Okay. The concern is that the manufacturer, OEM, may introduce some malware in a chip which is being used in those command control systems. Okay. So concern is valid, but any tactical computer which is purchased by military off the shelf also is checked by a few agencies which people don't know. One is SAG, of course, and also one should understand that in-house teams of Army, Navy, and Air Force have got capability to check whether there are benchmarks, benchmarking is done, and then these things are tested in various environments with standard configuration, which is tested in own gigs, not the foreign gigs. Okay. So it is part of deal that it is very easy on cell phones and all these small devices that you can have malware. It can function on at particular time or date or whenever I want. Number two, one should understand all these command control systems, whether it is aircraft, naval vessel, the submarines, the artillery command control system, or anything. They are, the coding of security aspects is done indigenously. They are not bought off the shelf ever. This means if there is a tactical computer in artillery, the security is done by Indian agencies. Okay. Not one agency does it. There are 3 or 4 people, different people who make modules, and they are, configured at one place finally. Okay. Even a small tactical computer, it is not that we are buying off the shelf that they can, communicate with our systems. No, they cannot do anything. Number 2, I will talk of
say latest weapons. Say I have got some weapon, and uh, how can someone enter to my system? There are two, three ways. Through espionage, that some insider is, and he connects that particular machine or device to, outsider. Not a single device works on internet. One should be very, very clear. Oh. So, yes, all these Rafael and all, they don't work on internet. They work on own network, for which all these PCMCIA card or communication devices are built in by us. Okay. Even if they are built by foreigners, those are, proprieties taken by us. So it is possible if espionage is there, but it is not possible that, for example, one aircraft we have bought and suddenly it will stop flying if someone else, controls from. No, it doesn't happen like that. Because everything, the entire command control system is in our control. That when there is no communication from outside world, then how can someone, control it? Yes, now it can be pre-fed, okay, at particular time and date on 19th of November 2022, Falana chip will start malfunctioning and the aircraft will not fly. Possible. But how will someone predict so precisely that some war is going to take place or some action is going to take place at that particular date? So it is theoretically, yes, possible. But practically, one has to be, one has to have a different level of, involvement to carry out such things. Okay. So you mean to say that we are more or less safe from that side? Yes, we are safe because we are continuously monitoring it. Okay. Okay. We cannot compare WhatsApp security breach. You must have read on newspaper 2-3 days ago, where those are very, very different from what we are talking of. Okay. That's we have purchased a missile system or anti-missile system, or latest aircraft. Can it have? Yes, it can have, but how will it function? And they are checks. Small difference. You see, what happens is, I will tell you. I was with a team which were to check a tactical computer. Okay, tactical computer means normal computer. It is hardened and many things, more things it can do. So we got it from a foreign country, but communication system was ours, because no one in the world uses WD cable for communication. What we do, we still do, and so we had to develop our own communication cards. Now, besides communication card, everything was foreign, and the same company was selling it to other world countries also. So we got one tactical computer from third country. Okay. And we compared it bit by bit. So that is how we catch that it can be caught. Okay. There is slightest of difference. ओके अभी मैं साइबर वारफेयर की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके साथ, बिकॉज थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला कि इनके जो पावर ग्रिड के जो कुछ सिस्टम्स हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, वो हैक हुए. तो ऑब्वियसली हैकर्स ने किए होंगे, और हैकर्स मीन्स वही जो आप कह रहे हो ना, जो हाइब्रिड वारफेयर है, जहाँ पे लोग ट्राई करते हैं आपके कम्युनिकेशन, कमांड कंट्रोल, इन सब को डिसरप्ट करने की, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए. बैंक्स में भी कई बार आप देखते हो. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो चलो ठीक है, 3-4 घंटे तक सिस्टम बंद हुआ, फिर चालू हो गया, यू आर ऑल राइट. बट लड़ाई के टाइम पे अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि हमारे जैसे पावर ग्रिड सिस्टम या उस टाइप के लोड डिस्पैच सेंटर्स, जहाँ पे बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सब होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर वो अफेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर कि वी आर अलाइव टू दैट सिचुएशन. तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज़ अवर कैपेबिलिटी, इवन इफ आई डोंट वांट द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन,
But I hope we are capable to defend ourselves against cyber warfare or hybrid warfare for that matter. I will take the same example of power grid. When we talk of power grid, you see, if I don't know whether people are aware or not, the high tension power cables are also used for communication. Okay, they have got dual purpose. Besides, carrying the power, they are capable of communicating also. Besides that, the equipment at power grid stations, or even for that matter, I will tell you, the say 33 kVA or 11 kVA, or I'm talking of very very small transformers, Yeah, yeah. and LT panels and HT panels and all. They have got, these days they work on GSM network. Okay. This means all these inverters means they are basically converters, high level to low level, and Yeah, the yeah. transmission. All these have got data loggers. These data loggers have got communication devices which work on GSM. Okay. The Okay. GSM is, this means you have to put a SIM card in it, so that at central location you can check how much power is being distributed or being generated or whatever. This means if there is a power plant in Himachal Pradesh, people sitting in Delhi can monitor at which particular location and device within that power generation center there is a less power generation, and what could be the cause. Whether Okay. turbine is not working or sludge is more or whatever it is. Mm-hmm. So now when this is hacked, this means a particular SIM card is, or a particular network has been compromised with the help of insider, which is caught within no time, because the person who is monitoring is also monitoring which is not working, which is working. Mm-hmm. So as soon as one network goes down, immediately there are quick reaction teams which immediately follow. But shutting down entire northern grid is not possible. Yes, part of that grid may be down, but entire grid functioning of entire grid is very difficult, and there are now alternate means also, wherein people are being trained to work on alternate means to keep the system running in case of emergency. ओके। अच्छा, पंकज ये बताओ, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस जेंटलमैन, मेजर परवीन साहनी। वो मेजर तो खैर यूज़ नहीं करता, बट दिस जेंटलमैन इज़ क्वाइट एक्टिव इन स्पेशली इंडो पाक और इंडो चाइना स्ट्रेटेजिक इशूज, उस पर वो बोलता रहता है। अभी जैसे पाकिस्तान में एक वो इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था, या सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें भी वो इनवाइटेड था पाकिस्तान की तरफ से, और वो जनरली रहता है इन्वॉल्व। तो दिस जेंटलमैन बिफोर द लद्दाख एपिसोड, जब चाइनीज वहाँ पे आए उस टाइम पे उसने कई वीडियो बनाए, और उन वीडियो में उसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि चाइना वालों को एक्चुअली कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं, दे हैव गॉट दैट मच साइबर वारफेयर कैपेबिलिटी कि हमारे पूरे सिस्टम्स, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरे वो ब्लॉक कर देंगे, एंड दे कैन विन विदाउट फायरिंग ए शॉट। मीन्स ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने खुद सुना है, और ऑफ कोर्स मैंने उसको काउंटर तो किया ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे लगा कि वो साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक अच्छा खासा टूल है, और इस तरह के स्टेटमेंट्स का वही पर्पज होता है। बट लेट अस बी रियलिस्टिक, अल्टीमेटली लोगों ने, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, और आपने तो ग्राउंड पे देखा है, उनको इस तरह की कैपेबिलिटी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी कि हम साइबर वारफेयर में किसी से भी पीछे ना रहें। तो अगर आप उस हिसाब से देखो कर्नल पंकज, तो
टोटल अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज लूँ तो साइबर वारफेयर कैपेबिलिटी में हम कौन से नंबर पे रहेंगे? और इज इट पॉसिबल फॉर चाइना टू जस्ट विन इट अक्रॉस साइबर वारफेयर अगेंस्ट अस? योर पॉइंट. See, Praveen, people like Praveen Sahni and all are basically part of hybrid warfare where they do propaganda more than anything else. Okay. People saying that you can hack every command control system on like this is impossible. It is impossible because there are different platforms, different levels of command control systems from strategic to tactical. You see, so talking that across the board everything can be with the help of cyber warfare can be no. Our boys are running Intel and Microsoft and whatnot, Facebook and everything. So if they can do there, we are doing here also. If you are aware, then Indian Army, maybe an Air Force, तो पहले से ले रहे थे. Indian Army also are taking now engineers in fighting arms. The engineering graduates, electrical engineers are going to fighting arm, not to signals, EME and engineers. Why? For these reasons. And also, what cyber attacks can be done are, on telephones, the handheld telephones, the cell phones and all that, or personal computers, where people, do foolishness by using, the portable devices, thumb drives, pen drives, all these things. But the command control system doesn't have there is no space to put thumb drive or pen drive or to connect anywhere. They are within that, they've got their own network, which even outsider cannot penetrate. How? Physically काट के तार नहीं जोड़ सकता, वो चलेगा ही नहीं. So it is, it looks very good. You see in movies, you see all these things going on, but when there is a closed system, my point is in closed system, it is very difficult to infiltrate unless someone insider is taking out data and giving you, or some espionage is possible, but sitting in somewhere and controlling my command control system is a difficult task. It can be done. It can be done at say theoretically. If it is, it can be done. It can be done in one place, not the entire India. Okay. Because there are many levels. Yeah, very many services, many levels. Artillery has got different. Air Force has got different. Their platforms are different. Beauty is that. Okay, I got your point. So when we say multi-sensor data fusion that we were trying, we were facing so much of difficulty because the platforms are different. We were not able to integrate ourselves. China क्या करेगा हमारा integration? So the levels are different totally. So this saying just China can do within no time. Why they didn't do when Galwan was going on? They should have done it. तो थैंक यू कर्नल पंकज, आपने कई पॉइंट क्लैरिफाई किए एंड ऑफ कोर्स मैं जो भी आपने बताया उसके बेसिस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ एज ए इंडियन अपनी साइबर वारफेयर कैपेबिलिटी के ऊपर और इवन हाइब्रिड वारफेयर कैपेबिलिटी के ऊपर. सो थैंक यू. इट इज़ रियली ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू कर्नल पंकज. थैंक यू.